So, hello students, a very good evening to all of you. I welcome you all. I can see you guys here in the chat section like Nishant and Sudhanshu, Ashish, Ravikant, Chanchal, Priti, Jyoti. Good evening to all of you, very good evening. So, here we are now going to start this very important topic, that is metal cutting, and as all of us know that this topic metal cutting is very much important from गेट पॉइंट ऑफ व्यू. गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये मेटल कटिंग. मैं कोशिश करूँगा कि 5 to 6 अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इवन आई विल टेक देम 6-7 सेशंस में आपका लूँ और मैं कंप्लीट कर दूँ आपका होल टिंग. जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's begin this metal cutting, very important for upcoming GATE exam. Stay with me, join these live sessions, and I assure you that you will fetch 100% marks. Though if you don't know anything, just follow me whatever I tell you. So let me introduce myself to some of you who don't know me. Myself Rajeev Singh. I'm a plus educator on Unacademy platform, and I'm shaping the young minds like you for past 10 years. So guys, let's start. In metal cutting, the first thing that you need to understand, जो पहली चीज आपको समझनी है, that is about the tool angles. A cutting tool is the one which comes in direct contact with the workpiece to machine it. Yes, and you subdivide these cutting tools into two categories. One you call as single point cutting tool, दूसरे को आप कहते हो कि ये multi point cutting tool है. Single point cutting tool जैसे कि turning tool है, parting tool है, facing tool है, शेपिंग टूल है, प्लानिंग टूल है, स्लॉटिंग टूल है, थ्रेड कटिंग टूल है, पार्टिंग टूल है, ग्रूविंग टूल है. ये सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं. मिलिंग कटर्स, ग्राइंडिंग व्हील, ड्रिल बिट, ब्रोच, ऐसे नाम लेते चले जाओ, ये सारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज द वन व्हिच हैज वन कटिंग एज. नो, दैट्स रॉन्ग. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वो है, इज द वन if during machining, primarily, majorly, principally, if it can have many cutting edges, but primarily if only one cutting edge is in contact, then we say that it is a single point cutting tool. And if more than one cutting edges are in contact, we call it as multi point cutting tool. So first we are going to concentrate on single point cutting tool. If you look at the single point cutting tool, this single point cutting tool looks a bit like this. Let me just erase this and let me show this here. Give me a minute, I'll show you this tool. The single point cutting tool appears a bit like this. थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखता है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. Yeah. Yes, this portion over here you call as side flank. This is your side flank, and this portion you call as end flank. This over here, this surface is what we call as rake face. This is the basic that all of you know, all of you understand. This is what called as shank. Shank is called as the main body of the cutting tool which comes in contact with the workpiece during, which is used to be held onto the tool post. Now if you look at this tool, let us say this point over here is 0, this point there is 1, or this point over here is 2. 0, 1 and 0, 2 both are cutting edges. 0, 1 और 0, 2 दोनों क्या है? कटिंग एज है. During machining, let us say we are doing turning. So during turning operation, this whole thing is going to appear something like this. Let us say, let me choose the workpiece in some other color. Give me a minute. I'll take red one, right? Okay. So let us say this is your workpiece which you are machining. You are
turning basically, and then we have the tool here. Let me again choose the another color. That color was this one. Let us see this one. Okay, so like this is your tool, yes, that with the help of what you are machining the workpiece, yes. So what happens, this workpiece rotates and you feed this tool. Same tool is there. If you look at this point 0, then that point 0 is here. If you look at point 1 here, that point 1, if you look at, this goes like here, and this is the point number 2. So now forget that right hand side. Concentrate on this diagram on the left hand side. 0, 1 and 0, 2 both are cutting edges. If you look closely, you will understand 0, 1 is at the side of the tool, yes. So since 0, 1 is in the side of the tool, we will call that 0, 1 is the side cutting edge, and 0, 2 is at the end of the tool. We will call it as end cutting edge. Very simple to understand. And if you look at this figure, this diagram on the right hand side of the screen, 0, 1 and 0, 2. 0, 1 is the side cutting edge. 0, 2 is the end cutting edge, yes. Primarily, majorly, out of 0, 1 and 0, 2, which one is in contact? Come into this live chat. Let me know, out of 0, 1 and 0, 2, which one, out of 0, 1 and 0, 2, which one mainly machining the workpiece, mainly in contact with the workpiece? Undoubtedly 0, 1. So 0, 1, which is the side cutting edge, that is why it is also called as main cutting edge or primary cutting edge or principal cutting edge और मेजर कटिंग एज. क्योंकि 0, 1 जो साइड कटिंग एज है, इस फिगर में देख के आप समझ पा रहे हो कि ये साइड कटिंग एज है, ये मेजरली, प्राइमरली, मेनली, प्राइमरली कांटेक्ट में आता है वर्कपीस के इसके मशीनिंग के दौरान. इसीलिए हम 0, 1 जो कि साइड कटिंग एज है उसको मेजर कटिंग एज, मेन कटिंग एज, प्राइमरी कटिंग एज ये सब नाम देते हैं. 0, 2 क्या है? एंड कटिंग एज. What do you think? Whether this end cutting edge is in contact with the workpiece or not? Let me tell you, my dear, yes, 0, 2 का एक छोटा सा हिस्सा, एंड कटिंग एज का एक छोटा सा हिस्सा वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है. बहुत छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा 0, 2 का एंड कटिंग एज के साथ कांटेक्ट में आ रहा है. बहुत छोटा सा हिस्सा. क्यों? क्योंकि जो टूल का टिप है, देखो कोई सा भी मोबाइल फोन उठा लो ना, उसका टिप जो है वो शार्प नहीं होता है, राइट? क्योंकि उसको पता है कि अगर टिप को शार्प बनाया और अगर ये नीचे गिरा फोन टूट जाएगा. देखो कर्वेचर दिया है ना, राइट? उसी तरीके से टूल का टिप अगर एकदम से शार्प होगा तो क्या होगा, वो वर्कपीस के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा. दैट विल लीड टू द फेल्योर ऑफ द टिप ऑफ द टूल. सो द टिप ऑफ द टूल इज गिवन सर्टेन रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका यहां पे, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका यहां पे, this radius of curvature of the tip of the tool, that is also called the nose of the tool, is called as nose radius. And since you have made the provision of the nose radius, that's why a small portion, छोटा सा portion, इतना छोटा सा portion end cutting edge का भी वर्कपीस के कांटेक्ट में आ जाता है, but बहुत छोटा सा, negligibly small. It has 2 cutting edges, but primarily only 1 cutting edge is machining the workpiece. So this is a single point cutting tool. Now, my dear students, I defined 3 surfaces here in the tool. This was the rake face. This I told that this is side flank and this is end flank. These two, one at the end and one over here. Both of these are actually flank surface. This one is at the side of the tool, so side flank. This one is at the end of the tool, so end flank. Now, my dear students, if the machining has to happen effectively, efficiently, perfectly, अगर मशीनिंग effectively, efficiently, perfectly होना है, my dear students, then the chips which are coming out, look at this, the chips are coming out. I will show you the chips coming out from the workpiece here. Give me a minute. You see, chips are coming out.
as the chips are coming out from the workpiece during the machining, it will have a tendency to curl. It can curl in that direction as well as it can have a curl in this direction, ऐसा. मतलब ये चिप का लेंथ है, लेंथ वाइज भी ऐसा ये कर्ल हो सकता है, विड्थ वाइज भी कर्ल हो सकता है. Yes, dear student. Now, as it is curling, it may have a tendency to curl and enter in this gap. The gap you can see between the machine surface and below 0.2. Below 0.2, you have this end flank. Yes, that is not visible there. Later on, I will show you. But below 0.2 end flank is there, and this is nothing but the machine surface, as you can see. So that chip can go and enter into that gap. That gap is very small. If the chip enters, it will rub against the end flank of the tool. It will rub against the machine surface of the tool. What will be the result? It will deteriorate the surface finish. It will rub against the flank surface of the tool. It will reduce the tool life by wearing that end flank surface. That should not happen. So, it is our responsibility that yes, chips will curl, but it is our responsibility that we will make them flow away from machining zone. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा वहां सुनिश्चित करें कि चिप्स जो है उस मशीनिंग जोन से बाहर की तरफ जाए. Are you getting this? So that is the reason why this surface upon which the chip is flowing, you can easily understand it is the rake face. This rake face of the tool here, down here, this rake face of the tool is given certain number of slopes, certain number of inclinations, so that the chips flow away from machining. That is that you will have to assure if you want to do the machining perfectly, efficiently and effectively. Not only that, let me show you. Not only that, I'm sorry. Let me show you. Let me move it, or I'll just erase it. Don't worry, just erase it. And I'll show you another diagram so that many other things will be clear to you. And basics are very important in metal cutting. Formula rat ke kuch nahi hoga. Basics are very important. Basics are very important in metal cutting, my dear. Let me know you, because competition is increasing on daily basis. Basics नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाएंगे, नहीं कर पाओगे, शीर्षासन कर लोगे नहीं होगा, बाबा रामदेव का कोई भी योगा कर लोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बेसिक्स नहीं होंगे. फार्मूलाज रटने से कुछ नहीं होने वाला. फार्मूला रट के 40 से 50 मार्क्स आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा. 80+ लेके आना है तो बेसिक्स होना जरूरी है. क्रैश कोर्स में भी बेसिक्स दिया जा सकता है. घबराओ मत, बने रहो बस मेरे साथ, बने रहो बस मेरे साथ. एंड here joins someone named as Global. Great, welcome you, Global. So here comes the workpiece. You see, beautiful workpiece, and furthermore we are going to beautify it by machining it. Yes, देखो ये तो वर्कपीस है, इसकी मशीनिंग कर रहे हो. टूल को थोड़ा सा अलग कलर में ले लें. Let us take the tool in somewhat different color. Let us say that color, huh? Just a minute. This is your tool. Look at this beautiful tool. This is the beauty of metal cutting that you are looking at. Look at the beauty. Yes, and beauty must be appreciated. You must appreciate this beautiful diagram. Right now, मैं आपको surface दिखा रहा हूँ, which is below 0.1. Yes, look at this 3-dimensional diagram. What is that surface? Side flank. What is that surface? Side flank. क्या चाहते हो? इस तरफ अगर देखो, एक दूसरे कलर से दिखाता हूं. Just hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. मजा आने वाला है, मजा आने वाला है. Look at this surface. What is that? Down there, vertical surface there. End flank. Yes, that is end flank. And on the top,
Let us choose this green color, green, always green, always green. You see, this surface on the top is your rake face, isn't it? Down there, black color, inside, side flank. That is somewhat orange color, end flank. And that on top, some green color is your rake face. Rake face was sloped, was given certain number of inclinations. Why? To assure that the chips flow away from machining zone. But not only that, my dear students. You know, the side flank and the end flank, the black color one and that orange color one, they also need to be given certain number of inclinations, certain number of slopes. इनको भी कुछ inclinations, कुछ slope देना ही होगा. You know why? क्योंकि what do you think? During machining, only the cutting edge should come in contact with the workpiece, or flank surfaces should also come in contact with the workpiece. मशीनिंग अगर कर रहे हो तो केवल कटिंग एज वर्कपीस के कांटेक्ट में आना चाहिए या फिर फ्लैंक सरफेसेस भी कांटेक्ट में आने चाहिए. Undoubtedly, if you are doing machining, only the cutting edge should come in contact with the workpiece. Flank surfaces, that black color one and that orange color one, both these surfaces must be relieved from the workpiece. If they are not relieved from the workpiece, they will start, rubbing against the workpiece. Very nice. I can see your answers there in the chat box. Very nice. Yes, to avoid rubbing, yes, these surfaces should also be given certain number of slopes. So by now it is clear that to assure that the machining happens effectively, efficiently, chips must flow away from machining zone. Only the cutting edge should be exposed to the workpiece, and there must not be any contact between tool and workpiece along the flank surfaces. And to assure that, what are we doing? To assure that we are sloping, we are inclining all the surfaces, whether rake face, side flank or end flank, इन सारे surfaces को हम certain number of slopes दे रहे हैं, certain number of inclinations दे रहे हैं. अब ये slopes और inclinations कैसे देते हो? तुम क्या टूल को ऐसा पकड़ के tilt करते हो क्या? नहीं, आप इन सरफेसेस को ग्राइंड करते हो, ग्राइंड करके आप ये स्लोप्स देते हो. चलो, ग्राइंड करके अपने को स्लोप देना है. मैक्सिमम कितने स्लोप्स दे सकते हो ग्राइंड करके एक सरफेस को? बोलो रे बाबा. एक ये सरफेस है, इसके नीचे मान लो सब कुछ सॉलिड है, इसके नीचे सब कुछ सॉलिड है. ग्राइंड करके इस सरफेस को मैक्सिमम कितने स्लोप्स दे सकते हो? कीप दैट इन माइंड कि दिस सरफेस शुड रिमेन अ प्लेन, अ टू डायमेंशनल सरफेस. ऐसा नहीं कि इसको इस तरह से ग्राइंड करो, इस तरह से ग्राइंड करो, इस तरह से ग्राइंड करो कि इसमें कोई कॉन्वेक्सिटी आ जाए या इसमें कोई कॉन्केविटी आ जाए. अवतलता उत्तलता नहीं आनी है, इसे प्लेन ही रखना है. तो ग्राइंड करके इसको मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्लोप्स दे सकते हो? आई विल टेल यू माय डियर. ग्राइंड करके इस सरफेस को मैक्सिमम 2 ही स्लोप दे सकते हो. लाइक इधर से इधर ग्राइंड कर दो. नीचे मान लो पूरा सॉलिड बॉडी है, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं दिखाऊं, बट मान तो सकते हो ना. यस, तो इधर से इधर ग्राइंड करके स्लोप कर दिया. एक स्लोप, ये स्लोप दिखेगा भी आपको. देखो इसके बीच ऐसा स्लोप बन रहा है ना, इतना एंगल है, देख रहे हो, यहां से नीचे तक. और दूसरा स्लोप इधर से उधर तक. तो देखो, एक स्लोप यूं दे दिया इस डायरेक्शन में, और दूसरा स्लोप मैं आपके तरफ देता हूं, ऐसे ग्राइंड कर देता हूं. देखो इस सरफेस के जानते हो कितने इंक्लिनेशंस हो गए? 2 इंक्लिनेशंस हो गए. कैसे? देखो, एक तो इस डायरेक्शन में एक इंक्लिनेशन, और दूसरा इंक्लिनेशन देख रहे हो उस डायरेक्शन में भी तो है. 2 इंक्लिनेशन हो गए ना सरफेस के. अब इस सरफेस को अगर आप एट ए टाइम तीसरा कोई भी स्लोप, तीसरा कोई भी इंक्लिनेशन देना चाहो, 1 2, तीसरा कोई भी इंक्लिनेशन देना चाहोगे ना ग्राइंड करके, तो ये प्लेन नहीं रहेगा. ये क्या बन जाएगा? 3 डायमेंशनल बन जाएगा. कॉन्वेक्सिटी आ जाएगी या कॉन्केविटी आ जाएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेक फेस, साइड फ्लैंक, एंड फ्लैंक में कोई कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी थोड़ी ना होती है जब आप फ्रेशली रीग्राइंड करते हो टूल को. तो नहीं. So one thing is very much clear to all of you, that one surface can be given
two different slopes. Can be given two different slopes. How many such surfaces are there which has to be sloped? ऐसे कितने surface हैं यहाँ जिनको आप slope करना है आपको? How many surfaces are there? 3 surfaces are there. Every single surface can be given like 2 slopes. So in total 3 surfaces, every surface can be given 2 slopes. How many different angles will be there? Undoubtedly 3 surfaces, each of the surface can be given maximum 2 slopes, so maximum number of angles total will be 6. Yes, एक सरफेस के 2 एंगल, 3 सरफेस है, 3 गुना 2 6 एंगल्स. एक टूल को डिफाइन करने के लिए कितने एंगल्स लगेंगे? एक टूल को डिफाइन करने के लिए कितने एंगल्स लगेंगे? 6 एंगल्स हो गए. और एक तो अभी बताया था ना आपको, नोज रेडियस. नोज रेडियस भी तो टूल को डिफाइन कर रहा है. कम है, ज्यादा है, नहीं है, उसका बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली सरफेस फिनिश और टूल के स्ट्रेंथ को लेकर के. डियर स्टूडेंट्स, तो 6 एंगल्स और एक नोज रेडियस, कुल मिलाकर के 7 कंपोनेंट्स लगेंगे. दीज 7 कंपोनेंट्स विल बी नेसेसरी to define and recognize a tool. Yes, that's why there comes a term called as tool signature, है ना? टूल सिग्नेचर, है ना? मेरा सिग्नेचर देखोगे तो बैंक वाले मेरे को आइडेंटिफाई करेंगे, तुम्हारा सिग्नेचर देख करके तुम्हें आइडेंटिफाई करेंगे. तुम्हारा सिग्नेचर जाके मैं करूंगा तो मुझे पैसे देंगे क्या? तुम्हारे अकाउंट से बैंक वाले नहीं देंगे ना. तो उसी तरीके से हर एक टूल का अपना एक सिग्नेचर होता है. उस सिग्नेचर में क्या होता है? 6 एंगल्स होते हैं, एक नोज रेडियस होता है. टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 कंपोनेंट्स होते हैं. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितने कंपोनेंट्स? 7 कंपोनेंट्स. ग्रेट ग्रेट, ऑसम डियर, ऑसम, ऑल ऑफ यू आर ऑसम. नाउ कम्स दैट you know that there is tool signature, 7 components, and as I think most of you somewhere studied, there are different types of tool signature systems. Like नाम तो सुना होगा राहुल? नहीं, नाम तो सुना होगा ASA, ORS, NRS, VRS, ये सब नाम सुना होगा. अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, नॉर्मल रेक सिस्टम. अरे ये सब क्या है यार? ये डिफरेंट टूल सिग्नेचर सिस्टम्स है. बट एक बात तो ध्यान में रखो, कोई सा भी टूल सिग्नेचर हो सिस्टम, कोई सा भी टूल सिग्नेचर सिस्टम हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे? 7 ही होंगे. लेट्स स्टार्ट द टूल सिग्नेचर. ओके, लेट्स बिगिन विथ टूल सिग्नेचर माय डियर स्टूडेंट्स. लेट्स बिगिन विथ टूल सिग्नेचर. यस, ऑसम. I can see many of you are here, and yes, you are enjoying the class, even I am enjoying the class. So let's begin with tool signature. As all of you know, the first tool signature system is ASA, and by the end of the class, believe me, you will also come to know why different tool signature systems. Okay, that also you'll come to know. You see the beauty of tool signature today, tonight itself. Yes, yes, here in this class. So tonight itself we will complete ASA and ORS. Tonight itself. Stay with me. Stay with me. पानी वानी पी लो, नाश्ता वाना कर लो, खाना वाना खा लो. साथ में खाते रहो, क्या टेंशन है? और मैं पानी तो पी ही सकता हूं. Listen to me. ASA tool signature. Yes. ASA दिख रहा है? हाँ, nice. ASA tool signature. Yes. थोड़ा सा लिख लेता हूं. ऐसा प्यारा सा ASA टूल सिग्नेचर. एंगल्स तो जानते ही होंगे ना, कैसे कैसे होते हैं. लाइक 6 एंगल्स होंगे, कुछ भी ले लो वैल्यू. 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12, सॉरी 2 2 4 1 5. इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, टेंशन मत लो. लाइक 9 डिग्री, 25 डिग्री, 2 4 6 एंगल हो गए. एक कुछ नोज रेडियस ले लो. देखो, अमेरिका वालों ने ये सिस्टम बनाया, इसलिए नाम है ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन. एक एसोसिएशन है, उसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन. उन्होंने इस टूल सिग्नेचर सिस्टम को प्रपोज किया कि ऐसे हमें लिखना है. और अमेरिका वाले तो इंच लिखते हैं. ऐसा नहीं कि इंच लिखा हुआ है तो आप कह दोगे ASA, ऐसा भी नहीं. बिकॉज इंच कैन बी चेंज्ड इनटू mm ना, and mm कैन बी चेंज्ड इनटू इंच ना, वेरी इजीली, राइट? सो डोंट थिंक दैट वे. मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, कैसे, क्या है ना. थोड़ा सा होल्ड करो,
सब्र करो, सब पता चलेगा। मैंने एमएम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंच भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, आपको पता ही होगा, कुछ लोग को होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। पहले दो एंगल्स का नाम जानते हो क्या होता है? पहले एंगल का नाम होता है बैक रेक एंगल। मैं लिखता हूं, चलो ठीक है लिख देता हूं, बिकॉज ये याद भी तो रखना है। बैक रेक एंगल, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा बी से। ये वाला आपका होता है साइड रेक एंगल, इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा एस से, ठीक है। अब देखो, ये वाला होता है एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, है ना। मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, कैसे याद रखोगे इसको, आप घबराओ मत। इसको डिनोट करेंगे अपन गामा ई से। ये वाला वैसे ही क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल होता है। इसको डिनोट करेंगे, वी विल बी डिनोटिंग दिस एंगल बाय गामा एस। एंड ये वाला क्या होता है मालूम है क्या? इसको कहते हैं अपन एंड कटिंग एज एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नाम तो सुना ही होगा, राहुल साई ई। और ये वाला क्या है, साइड कटिंग एज एंगल। मैं भी इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको डिनोट करेंगे अपन साई एस से। कोई भी बोलेगा कि लास्ट में क्या है, नोज रेडियस है, ये तो कोई बता सकता है बच्चा, है ना। लास्ट में क्या है, नोज रेडियस है। चलो याद कैसे रखोगे, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में नोज रेडियस। इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों, ऐसे याद रखना है। यू सी, पहले दोनों एंगल्स याद होते हैं, मुश्किल बीच में होती है। तुम एक पोएम याद करो ना पहले, BS 2 times ES N, 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 BS 2 times ES N। पहले दो एंगल्स रेक, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल। इसके बाद क्या है देखो, BS 2 times ES है ना। देखो बकरे की स्टोरी आती है, बकरीद मनाते हैं नहीं, बकरे को बहुत पहले खरीद के लेके आते हैं, 1 महीने घर में रखते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, मोटा करते हैं, वजन बढ़ाते हैं, फुल रिलीफ देते हैं। बकरा भी सोचता है जन्नत है तो यही है और कहीं नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। नहीं, रिलीफ पहले देते हैं, कटिंग बाद में होता है। किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, फांसी की सजा देते हैं, क्या करते हैं उसको, जब उसकी फांसी की सजा की डेट मुकर्रर हो जाती है, तो अगर 7 दिन पहले 10 दिन पहले फिक्स कर दिया जज ने कि इस दिन इतने बजे इसको लटका देना है, तो उसके बाद उसको बहुत रिलीफ देते हैं। तभी तो उसको फील होगा ना, मैंने गलती की थी और मैं मरने जा रहा हूं। यस, वो अगर बोलेगा मुझे चिकन बिरयानी खानी है, देखो ना कसाब ने कहा था ना, आई वॉन्ट चिकन बिरयानी, ही वॉज गिवन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। रिलीफ पहले दिया जाता है, कटिंग बाद में की जाती है। रिलीफ कटिंग, देखते हो ना, बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन के जब आप कॉलेज जाते हो, आपके दोस्त आपके पीछे आते हैं, कहते हैं वाह भाई तू तो सलमान लग रहा है, सलमान भी फेल है तेरे सामने, भाभी को आज प्रपोज कर दे, तू प्रपोज करना दे। हमारे बिहार में कहते हैं प्रपोज मार दे, है ना। आप खुश हो जाते हो कि सच में मैं ही सलमान हूं। फिर आपको कैंटीन में लेके जाते हैं, है ना, वहाँ कोक, पेप्सी, नो समोसा, चाट, एवरीथिंग गोज, एंड अल्टीमेटली कटिंग किसकी होती है, किसके जेब की कटिंग होती है, आपके। रिलीफ पहले दिया जाता है, कटिंग बाद में की जाती है। आप सलमान थे नहीं, आपको बनाया जा रहा था, राइट। रेक, रिलीफ, कटिंग। BS 2 times ESN, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल, एंड नोज रेडियस। नाइस, ऑसम। चलो नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दीज एंगल्स इन दिस ऑर्डर ओनली। ये भी समझेंगे कि ये एंगल्स इसी ऑर्डर में क्यों है और ये एंगल्स हैं क्या। देखो सबसे पहले, और कहीं नहीं समझोगे इसको, कोई नहीं समझाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि ASA सिस्टम व्हिच इज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन machine reference system. They say that this tool signature, ASA tool signature, is based on machine reference system. तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये machine reference system ये आखिर है क्या, what exactly is this machine reference system, ये हमें समझना होगा। Hold on dear, don't worry, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तो पता है नाम से ही कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने प्रपोज किया ये टूल सिग्नेचर,
टूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये बेस्ड है मशीन रेफरेंस सिस्टम पे। ये मशीन रेफरेंस सिस्टम आखिर होता क्या है? ये होता है मशीन रेफरेंस सिस्टम, नथिंग, छोटा सा ये वर्क पीस, hold on and look at the beauty of this workpiece and tool when they are together. Have you seen the machining operation going on? Isn't it give a different kind of satisfaction when you watch it? Yes, that is the beauty of metal cutting. Yes, and especially that beauty gets enhanced when it is explained by Mr. Rajeev Singh, who is the plus educator on right now, who is the plus educator on Unacademy platform. Yes, let me choose another color. This is a workpiece, this is a tool. Now, let us look at this. This is your machine. ये मशीन है आपका। ये क्यों आता है बार बार? परेशान मत करो बाबा। नहीं, यस, ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं, हम इसको ऊपर ही जाने देते हैं। इस साइड ये टेल स्टॉक लगा होगा, यस। इस साइड यहाँ हेड स्टॉक होगा कहीं, देखो थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे आ जाता यार। या सी, यहाँ ड्रॉ नहीं होगा, चलो कोई नहीं, होल्ड ऑन, नहीं ड्रॉ होगा, ये खेल रहा है मेरे साथ। Let me take another page itself. छोड़ो, otherwise you keep playing. This is our workpiece. This is your tool. And here, let us say, we have this machine. It will not let me explain this interface, I think. But hold on. I will reduce the magnification. Is it magnified? Zoom out, zoom in, zoom out, zoom out. Yes. Oh, thanks, dear. Thanks a lot. You are great, man. Thanks a lot. Chalo. You found the problem, right? What was going on? Let me zoom it further out. Oh, great. That's looking great. This is your machine. Yes. Is it visible to you now? Because I have zoomed it out like it. This side is head stock. This side is tail stock. Yes. This side, this is head stock. This side, this is your tail stock. Now, here there is a line joining the head stock and the tail stock. Yes, there is a line joining head stock and tail stock. And you know what line is that? This is that line. This is that line joining this head stock with tail stock. Yes. Let us say that line joining head stock and tail stock, this red color one, is your x-axis. Then perpendicular to that, we have the another one, that is your y-axis. And where is that? Let me say here. This is here your y-axis. Fine.
and then we have another axis here, that is your z axis. Let me show that as well. Here is your z axis. Let me take the shapes, that will look beautiful. Yes, here this is your z axis. Yes, here somewhere there. Great. And thanks global. Awesome. You are one of my previous student from ABD. ABD means, is it Abbots? ABD, I think Ahmedabad. Oh, sorry, Ahmedabad. Okay, got it, got it. So this is your x-axis here. I'm sorry. Undo. Yes, here it is your x-axis, and there we have the y-axis, and this I told that this is the z-axis. Now let me take the pen. Okay, I am actually using this interface for the very first time, so I am not that much. So see, this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. Yes, and you know these are the axes of the machine. Look at this. Let me zoom it out. Yes, tailstock, headstock joining, x-axis perpendicular to that y-axis, and perpendicular to both of them is your z-axis. Now let me zoom in further. Great. Now look at this. We have few planes here, you know. Where are those planes? Let me show you. And these are the axes of the machine. Yes, keep that in mind, that these are the axes of the machine. Keep that in mind. Let me show you the planes here. Let me show you the planes here. I will have to, you know, take care of the colors, then only it will be better visible to you. Yes, here we have this plane. One of this plane is there, and its orientation is along, you know, undoubtedly x-axis. Look at this plane. Oh, yes, its orientation is along x-axis. Yes, there is another plane that we have here. There is another plane that we have here. Let me change the color, then only you will be able to visualize in a better way. So just a minute. Let me take this color. I have to very much cautious while choosing the color, because few colors doesn't, you know, appear that well. Okay, there is another plane. Oh, still it is red. Why? Just a minute, hold on. And now comes the shapes. This one. Okay. Just a minute, I got it. Shapes and color. Yes, from here I take. This is the another plane. Look at this. Look at that plane. Yes, its orientation is along y-axis. Yes, and then we have one another plane here. Look at this plane. This one. Look at this plane. Look at that plane, and look at that plane as well. Now let me take the pen. Shapes ka tension khatam. You know, if x, y, and z, these are the axes of the machine, then undoubtedly the planes which have been drawn with the help of these axes only will be the planes of the machine. Now, this plane over here, red color one, is having the orientation along the x-axis. So that plane, red color one here, is we identify as pi x plane, and we name it as, you know,
longitudinal plane. Longitudinal plane, because it is in longitudinal direction. And then this blue color plane, look at this plane. This plane is what we name as pi y plane, because its orientation is along pi y, along the transverse direction. So we name it as transverse plane. Yes, this is the basic thing that you need to understand if you want to solve all the questions, whichever question they ask. And this plane over here, you look at that plane, this plane, this is what we call as pi r. Pi r stands for reference plane. Okay, so these planes, red color one longitudinal plane, blue color one transverse plane, and down here this horizontal plane is the reference plane. Now look at this tool carefully. Look at this tool further very much carefully. You know what surface is that? Side flank. Yes. And what surface is this? Let me show you with another color. What surface is this? End flank. And on the top, let me show you with another color. What surface is this one? Here. What surface is this? Rake face. Yes, red color one is the rake face, and there this green color one is the side flank, and the purple one is the end flank. And you know, you have sloped them so that chips flow away from machining zone, so that the flank surfaces do not come in contact with the workpiece, right? Now my dear student, undoubtedly the side flank, if you slope it, look at this diagram, you will slope it towards me or away from me, undoubtedly towards me. Then only it will not rub against the workpiece surface. The end flank, in which direction you will slope towards yourself. Yes, if you slope it towards the machine surface, it will start rubbing with the machine surface, right? Yes. So there are these slopes, and if the slopes are there, if the angles are there, you see, let me say you. Tell me approximately what angle? What is the angle of the line or plane that I have drawn? Can you say it approximately? Few of you may say like 20 degree, 25 degree, 30 degree, 40 degree, 45 degree, anything. But that will not be correct until you ask me, sir, with respect to what? With respect to this might be 40 degree, and with respect to that, this will become 90 degree. So whenever you measure some angle, you measure with respect to some plane. Not only that, whenever you measure some angle, you measure it with respect to a plane. That is one thing. The another important thing is, in which plane are you measuring? In which plane are you measuring this angle? This 40 degree that you are measuring, undoubtedly you are measuring this with this plane, with respect to this plane. Okay, that is 40 degree with respect to this plane. But in which plane? This angle is being measured in the plane of this smart board. Yes, this 90 degree angle is being measured in which plane? The plane of this white screen. Isn't it, my dear student? Yes. So both of these things are very important, and especially in, while understanding the tool angles, the second one becomes quite important, very much important. That in which plane are you measuring? That is the game due to which there are different types of tool signature systems. That is the game. In which plane are you measuring? Yes. So okay, whenever you measure some angle, you measure it with respect to some plane and into some plane. Yes, with respect to some plane and into some plane. Now listen to my dear students. Listen to my dear students. Look at this. Here these are the three planes: reference plane, and we have
longitudinal plane, and we have the transverse plane. These three planes are there, right, my dear students? Now, listen to me carefully. All these three surfaces, rake face, side flank and end flank, they have certain number of inclinations, certain number of slopes. Undoubtedly, those slopes, those inclinations will be measured with respect to some plane, will be measured in some plane. You know, in ASA system, those angles of the three surfaces are measured with respect to and in any one of these planes. That is reference plane, longitudinal plane, transverse plane, either with respect to them or in them. And these are the planes of the machine. That's why it is said that ASA tool signature system is based on machine reference system. That's why it is said that ASA tool signature system is based on machine reference system. Is it clear to all of you? Now, come back. Let us bring all these planes at the cutting edge of the tool. That's what I am going to do. I am going to bring all these planes onto the cutting edge of the tool. Okay? Look at this, my dear. Let me add a new slide, and there I will be bringing all these planes at the cutting edge of the tool, and then you will understand whole ASA tool signature. You see, this is your tool. Yes. Okay, later on I will erase them, don't worry. This is your tool. Eraser has to work. Oof. Let me cut it. Cut option is not there. Hold on. चलो छोड़ो, टूल है ना, समझ जाओगे। इसको इसको भूल जाओ, यहाँ नहीं है। अरे फिर एक लाइन आ गया। Forget it for now. There's no other way. छोड़ो, मैं सीधा ड्रॉ करता हूँ फिर से। Just a minute, huh? Look at, actually this is the new interface that I am using. It will take some time for me to know it well, and don't worry, I'll make this interface fall in love with me. Yes, that's
Okay, this is your tool. Let us say. Now dear, we have few planes here. Yes, those planes are three planes that I had shown you earlier. Those three planes are, one was the red color plane in the x-axis direction. Yes, let us say this is the x-axis direction. So here there is a plane. There is the z-axis. Then we have the y-axis as well here. Yes, come on. So there is the plane. This plane is the longitudinal plane. Yes, this plane here is the longitudinal plane, pi x. And there is another plane. Let me choose another color for that. There is another plane. Yes, and let me extend this as well. Here in this direction. Okay, we have this plane here extending in this direction like this. Okay, this is the plane. Yes, I hope it is clearly visible to you. Yes, it is. And then we have the another plane here. Where did it go? Here. Here, yes. We have another plane here. ये थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट क्या करोगे, सुना है ना, कुछ अच्छा सीखने में और दिखाने में वक्त तो लगता है. फार्मूला कहोगे तो अभी रटवा दूंगा, मुँह जवानी याद हो जाएंगे सारे फार्मूला. But that's not going to work for you. इसको करो zoom out. Yes, there is another plane here. This one. Three planes are there. Yes. This is your reference plane. फ्री हैंड ड्राइंग करूंगा यार आपसे, ये शेप के चक्कर में दिक्कत हो जाती है. ये है पाई एक्स एंड दिस इज योर पाई वाई. एंड देयर आर थ्री डिफरेंट surfaces of the tool. One is down there, side flank. Another one is there, which is your end flank. Yes, end flank. Let me choose the color like this. And then we have another surface on top, that is your rake face. Let me show you the rake face by black color. This is your rake face. We are going to measure the inclinations of all these surfaces. Black color one rake face, purple color one end flank and side flank, with these three planes, which are pi x, pi y and pi r. Yes, remember this.
what have I done is I have already explained. Right now I am in Patna. Okay, Ravi Raj has already completed casting, forming, welding, machining from my lectures. Hi guys and good evening sir. Yeah, good evening, good evening, good evening, good evening to all of you. I didn't see the comments from long hours. Let me see what is going on. Jhama Jham is going on. Great. Ravi Raj complete. Ravi Raj, you can WhatsApp me, yeah? Okay. You are from India, Darjeeling. Stay well because it's a winter time, है ना? As well as Corona. चलो सुनो, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया मैंने. लगातार जा रहा था यार, लगातार हो रहा था, लगातार झमाझम हो रहा था. थोड़ा तो रेस्ट बनता है. पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा. सुनो, ये एंगल्स मीजर कैसे करते हैं ये ऑलरेडी, मतलब कैसे समझते हैं ये ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे समझा चुका हूँ. समझाने में लगता है 5 से 6 घंटा और मैं समझा चुका हूँ यूट्यूब पे इस तरह की ही क्लास में, मतलब स्मार्ट बोर्ड पे. आप क्या करना, सर्च करना ए से टूल सिग्नेचर राजीव सिंह, और वो पार्ट वाइज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसा है. ठीक है, वहां जाके देख लेना. पूरे अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एंगल्स कैसे कैसे होते हैं. बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. राइट. फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सीधा आपको ब्रह्मास्त्र देता हूं. आई एम गोइंग टू गिव यू डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र. सुनो, ब्रह्मास्त्र क्या है. बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. पहले प्रीवियस स्लाइड्स पे थोड़ा सा चलते हैं, वो जरूरी है. यस, लेट मी शो यू द प्रीवियस स्लाइड. दिस इज द टूल. कैन वी से दैट this portion is like showing you the width of the tool, this portion is showing you the length of the tool, and down there that is the base of the tool. Yes, width, length and base of the tool. Now come to the next diagram here. This is the width of the tool, this is the length of the tool, and down there we have this as the base of the tool. Yes, नीचे में बेस है टूल का, विड्थ और लेंथ को मिला दो तो बेस है टूल का. ओके, इफ यू लुक एट दिस पाई एक्स प्लेन, that is longitudinal plane. Yes, this pi x plane, don't you think so, it is looking like this is perpendicular to the length of the tool, perpendicular to length of the tool, and this pi x plane is also perpendicular to the base of the tool. You see, टूल का बेस ऐसा है इधर, और जो प्लेन उसके ऊपर पाई एक्स है वो ऐसा है. तो परपेंडिकुलर हुआ ना लेंथ के. यस, सो पाई एक्स इज not only perpendicular to the length of the tool, but it is also perpendicular to length and base of the tool. Yes, then pi x is, if you look at pi x plane, it is parallel to the width of the tool. Yes, pi x plane is parallel to the width of the tool, parallel to the width of tool. चलो, ये तो एक बात होगी. दूसरी बात समझो, पाई वाई को. पाई वाई, look at pi y. What is pi y? This one is pi y, right? This one is pi y, right? Pi y. Pi y is perpendicular to width of the tool. Pi y is perpendicular to the width of the tool as well as perpendicular to the base of the tool. Yes, pi y is perpendicular to the both width
base of the tool. Yes, and pi y is also parallel to, you see, pi y parallel to length of the tool. Yes, now मैं ब्रह्मास्त्र देने ही वाला हूं. Pi r, this is the reference plane, pi r. Let me zoom it out. This is the reference plane. Yes, pi r. This pi r is like parallel to base of the tool. Yes, pi r is like parallel to base of tool. Now, dear students, this you understood very well. Let me move to the next slide here and just hold on. What angles do we have? ASA angles. The ASA angles that we have are alpha B, back rake angle, side rake angle, end relief angle, side relief angle, end cutting edge angle, and side cutting edge angle. Right, dear students? These are the angles. Now, if these angles are there, undoubtedly they will be being measured with respect to sun plane, or we can write measured with respect to sun plane. If angles are there, they will be being measured with respect to sun plane, and not only that, they are being measured in sun plane. That's what you need to understand, and that's what you need to even remember. That's what you need to understand, and that's what even you need to remember, my dear students. You see, these are the angles measured with respect to and measured in. That's what we have to understand and remember. You see, to understand, you can go back in this YouTube and you can search ASA tool signature part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, Rajeev Singh, and you will get it. I have explained it beautifully over there. I will not waste the time over here. I'll just give you the direct Brahmastra. You see, did you ever think, or ever gave some time to understand why is this sequence only in ASA tool signature? Back rake angle, side rake angle, end relief angle, side relief angle, then comes end cutting edge angle, and then goes side cutting edge angle. There is a reason. You see, back rake angle is actually measured with respect to reference plane. That is what we call as back rake angle. You see, I will show you the back rake angle and side rake angle. Don't worry, these are very important angles, so I will show you here. And it is measured in pi y plane, while the side rake angle is measured with respect to reference plane, but it is measured in pi x plane. Now you didn't get anything, didn't understand anything. Just hold on, you will understand. Let me just add one page and let me show you. You see, this is what your tool is there. What do you think? How many slopes are there to the rake face? This is the rake face, yes? How many slopes are there on there at the rake face? Two slopes. One is in this direction, another one is in that direction. One is in this direction, another one is in that direction. Direction number 1 and direction number 2. These are the two directions. Let me zoom it out and you see. Zoom it in. Two slopes. One this side, second slope that side. Which slope out of 1 and 2 is backward? Which slope out of 1 and 2 is backward? Which slope out of 1 and 2 is backward? Let me know, dear. 1 और 2 में से कौन सा स्लोप बैकवर्ड है? पीछे के डायरेक्शन में कौन है? नंबर 1 और नंबर 2. नो चंदू मणिकंठा, नो 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 नो.
आउट ऑफ 1 and 2 ये वाले डायरेक्शन में जो स्लोप है ये बैकवर्ड स्लोप है। यस यस, वो वेरी नाइस। और वो वाला स्लोप जो है वो साइडवर्ड स्लोप है। ये बैकवर्ड स्लोप है, वो साइडवर्ड स्लोप है। दिख रहा है ना, सामने टूल है, टूल का ये बैकवर्ड स्लोप है और टूल का एक साइडवर्ड स्लोप है। यस, रेक फेस का this is the backward slope of the rake face, this is the sideward slope of the rake face. Now listen to me carefully. Whatever slope the rake face is having, whatever slope this rake face is having, that will be what? Your rake angle. The backward slope will be your back rake angle and the sideward slope will be your side rake angle, isn't it? Whatever this face is having like in slope in backward direction, that will be back rake angle. Whatever slope is there at sideward direction, that will be your side rake angle. That easy is this. That easy is this. You see, and what I have written. Back rake angle is measured with respect to reference plane and it is measured in pi y plane. Now this is the thing you need to understand. Just give me a minute and you will understand. Don't worry. Be happy. डोंट वरी, बी हैप्पी। सुनो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं और फिर दिखेगा आपको। यहां पे मैं आपको प्लेन्स दिखाने वाला हूं, ठीक है? एंड आई एम डूइंग दिस बैकवर्ड एंड साइडवर्ड लाइक अंडू 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 अंडू। 1 and 2 अंडू नहीं होगा क्या? चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। जूम इन जूम इन जूम इन। इसको मैं ऐसा इरेज करता हूँ, गो गोवा गॉन। और जो एक्स्ट्रा इरेज हो गया उसको मैं फिर से दिखाता हूँ। 1 मिनट। आज समझ जाओ, कल से तकलीफ नहीं रहेगी, बस आज की तकलीफ है। ये हमारा रेक फेस है, राइट? इस रेक फेस के 2 स्लोप्स हैं, अभी आप समझ चुके हो। इस डायरेक्शन में जो स्लोप है बैकवर्ड स्लोप है, तो इस डायरेक्शन वाला जो एंगल होगा बैक रेक एंगल होगा। उस डायरेक्शन में जो स्लोप है वो साइडवर्ड स्लोप है, तो उस डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो साइड रेक एंगल होगा। सुनो अब ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली डियर, है ना? बस 10 मिनट दे दो और फिर लाइफ को एंजॉय करोगे आप। लाइफ को फिर आप एंजॉय करोगे। ये देखो, इस तरफ ये एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस है, और हमारे पास इस डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है और यहां पे एक प्लेन है, राइट? और इस डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है। जस्ट अ मिनट, लेट मी डू इट लाइक अनडू। यस, ये इस तरफ वाई एक्सिस है और इस डायरेक्शन में भी एक प्लेन है। देखो, एक्स डायरेक्शन में कौन सा प्लेन है? ये वाला। यस, और ये प्लेन का नाम क्या है? पाई एक्स। वाई डायरेक्शन में कौन सा प्लेन है? मेरे को अलग थोड़ा सा एक कलर लेने दो, तब अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। आई होप ब्लैक कलर ले ले तो दिखेगा। इस तरफ का प्लेन देखो, ये प्लेन जो है ये कौन सा प्लेन है? पाई वाई प्लेन है। यस, एंड ये पाई वाई प्लेन और एक और प्लेन है, उसके लिए भी एक अलग कलर चूज करता हूं, दैट इज द रेफरेंस प्लेन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस विल टेक टाइम बट दैट विल मेक योर लाइफ रियली इजी। सी, यहाँ पे ये एक प्लेन है, क्या नाम दूं इस प्लेन का? इस प्लेन का नाम क्या दूं, क्या लगता है? रेफरेंस प्लेन है ना? दिस इज योर रेफरेंस प्लेन ना? ओके, ये रेफरेंस प्लेन है ऐसा, और ये रेफरेंस प्लेन टूल के बेस के पैरेलल है। यस, रेफरेंस प्लेन टूल के बेस के पैरेलल है। सुनो, रेक फेस का बैकवर्ड स्लोप हो या साइडवर्ड स्लोप हो, लुक एट ऑल दीज 3 प्लेन्स, व्हाट डू यू थिंक? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट प्लेन
will you measure the angles of the rake face? Out of pi x, pi y and pi r. Pi x, pi y and pi r. Out of the three planes, रेक फेस का कोई सा भी स्लोप हो, कोई सा भी इंक्लिनेशन हो, बैकवर्ड हो या साइडवर्ड हो, वो किस प्लेन के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे डियर? यू सी, अनडाउटेडली आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. I am waiting for your comments. Yes, Kritesh, very nice, awesome. Out of the three, whatever the slope the rake face is having, that will be measured with respect to pi r plane. That is very much clear and very easy to understand. Now, in backward direction, how much is this angle? Let me show you. In backward direction, if you measure, how much is the angle? You see, this is the angle in the backward direction. Which color will be suitable there? I think this will be visible to you. Yes, I think this will be visible to you. You see, रेफरेंस प्लेन ऐसा है यहाँ पे, यहाँ से रेक फेस तक का एंगल कितना है? देखो, यहाँ से यहाँ तक यही एंगल है रेक फेस का, ये वाला एंगल. यस, यही तो है बैकवर्ड स्लोप, इतना ही तो है बैकवर्ड स्लोप. यस, तो ये जो एंगल है इसी को तो कहते हैं बैक रेक एंगल. ये जो एंगल यहाँ दिख रहा है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का, this angle is what we call as back rake angle. Now, back rake angle is being measured with respect to which plane? You see, pi r plane. And this measurement that you are doing, that measurement is being done in which plane? You see, in this black color plane, that is pi y plane. Did you understand? With respect to pi r. In pi y. Yes, my dear. So that is why I wrote here, look at this, back rake angle is measured with respect to reference plane and in pi y plane. Okay? Or in words, you know how do we define this back rake angle? We define this back rake angle like this. It is the angle of inclination of the rake face measured with respect to a plane which is parallel to the base of the tool, and it is measured in a plane which is parallel to the length of the tool but perpendicular to the base and width of the tool. Did you understand anything? No. You know what did I say? Now let me tell you this slowly. I told you this. Look at me carefully. Listen to me carefully. I told you this. What is that? I told you that back rake angle is the angle of inclination measured with respect to a plane which is parallel to the base of the tool, and it is measured in a plane, you see, which is parallel to the length of the tool but perpendicular to the width and base of the tool. That is what I said to you. Yes? So if you try to remember this in words, you will never be able to do that. But if you understand this along with this, then you can easily remember. Though if you don't understand, then I will give you a trick. Just let me write you. This is how all the angles are defined. You see, rake face, this direction, it is having the sideward inclination, so that angle will be your side rake angle. That angle will be your side rake angle. That angle is measured with respect to which plane? Undoubtedly that angle will be measured, means this from here to there, right? This is the angle, same angle, this is the angle, this is the angle. This angle is showing you the sideward slope of the rake face, sideward slope of the rake face with respect to what? Reference plane, pi r. You see, that's what I wrote here, with respect to pi r, reference plane. And this measurement that you are doing, like from here up to this, from here up to this angle, that this measurement that you are doing in which plane? Undoubtedly you are doing this in the pi x plane. That's why I wrote here, you see, that
this angle is measured with respect to reference plane, but it is being measured in the pi x plane. Very much clear to you? And all the other angles are defined in this way only. By the way, let me write them. Gamma e is measured with respect to pi x, this with respect to pi y, this respect to pi x, this with respect to pi y, this is measured in pi r, this is measured in pi r, this is measured in pi x, this is measured in pi y. Yes, you'll be thinking, how did you write all these things? Huh? So fatafat, I didn't understand anything. You need not to understand. Don't worry. Don't worry. Just be happy and listen to me, my dear. Listen to me, my dear. Listen to me, my dear. सुनो, कभी सोचा, अब मैं एक्चुअली इस क्लास में मजे वाली बात बताने वाला हूँ, तो नहीं सुना होगा आपने, अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है कभी और कहीं और लिखा हुआ नहीं मिलने वाला. That is my guarantee. This is patent of Rajeev Singh that I am going to show you. इसी ऑर्डर में अमेरिका वाले ने क्यों टू सिग्नेचर लिखा? इसी ऑर्डर में क्यों लिखा? कुछ और भी ऑर्डर लिखते, इन दोनों एंगल्स को पहले लिखते, इनको बाद में लिखते. अजीब अजीब से बच्चे एक्सप्लेनेशन देते हैं, टीचर्स एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसी ऑर्डर में क्यों लिखा. मैं बताता हूं आज राज की बात, क्यों इसी ऑर्डर पे लिखा. और यूट्यूब के इतिहास में तो दूसरी बार, पहली बार भी मैं नहीं बताया था, दूसरी बार भी मैं ही बता रहा हूं. कोई दूसरा बता रहा है तो राजेश सिंह को कॉपी कर रहा है. यस, ये बात इन लिखी हुई है, पेटेंटेड है, दैट टू बाय राजीव सिंह. सुनो, you know, whenever the things are generalized, is made universal, then it is made, you know, in such a way that becomes very easy to understand, to grasp, to remember. जब भी किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जनरलाइज करते हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाने चाहते हो, तो उसको इतना इजी बनाना चाहते हो, इतना इजी बनाना चाहते हो, इतना इजी बनाना चाहते हो कि वो सबके समझ में आसानी से आ जाए. इसीलिए ऑर्डर लिखा गया. इससे इजी ऑर्डर याद रखने के लिए और समझने के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है. देयर इज नो अदर इजी ऑर्डर, better order than this order. You know why? That is the trick that I will give you. You are going to enjoy it. You look at this. If you look at this table like a James Bond, अगर इस टेबल के ऊपर आप जेम्स बॉन्ड की तरह देखते हो तो समझ में आएगा. You see, pi r, measured with respect to planes. The planes in with respect to which you are measuring these angles. Look at this. You already know this. BS 2 times ES, back rectangle, side rectangle, end leaf angle, side leaf angle, end cutting angle, side cutting angle. Now look at this with respect to what? Then it goes like pi r, pi x, pi y, and then you look into this column, the place in which you are measuring. You see, this order is just like reverse, isn't it? This order is just reversed. Look at this very carefully here. Pi r, pi x, pi y, and then comes pi r, pi x, pi y. Just the order has been reversed. Do you think that will there be any other better form? Will there be any other better sequence? No. And now I give you the trick. If you don't remember, didn't understand, need not to understand, you just remember this. You just remember this. What? There I have written this. These things just you remember. Yes? These things just you remember. These things just you remember. And then you can answer any question that they ask you. Just remember this. Pi r is perpendicular to the length and base of the tool. Pi x is parallel to the width of the tool. Pi y is perpendicular to the width and base of the tool. Pi y is parallel to the length of the tool. And pi r is parallel to the base of the tool. That's what you remember and you try to understand. And that's not that tough to understand. Anyone can understand this. Now you listen to me. How to remember this order? Very easy. This already I gave you trick. BS 2 times ES, BS 2 times ES, पहले रेक आएगा, फिर लीफ आएगा, फिर कटिंग आएगा, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड लीफ एंगल, साइड लीफ एंगल, एंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल. उसके बाद पेटेंटेड ट्रिक एक और याद करो. ये पेटेंटेड ट्रिक है पाई आर स्क्वायर पाई एक्स पाई वाई का होल स्क्वायर. दैट्स इट. पाई आर स्क्वायर पाई एक्स पाई वाई का होल स्क्वायर. क्यों लिखा? देखो, पाई आर पाई एक्स पाई वाई. फिर क्या आएगा? पाई आर पाई एक्स पाई वाई. उल्टा कर दो ना उसको यार. दैट्स इट. उल्टा कर दो ना उसको यार. दैट्स इट. यस, समझ में आया क्या? क्या मैं समझाना चाह रहा था? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस. सो दिस इज द पेटेंट ट्रिक
बाय राजीव सिंह। सुनो, जाना मत कहीं। आते जाते रहे हैं लोग, मैं देख रहा हूँ क्लास में बहुत लोग, लेकिन शुरू से अंत तक बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराओ मत, मैं क्वेश्चंस भी यहीं करवाऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लो। लेकिन आज कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है? थक गया हूँ, बहुत दिनों के बाद खड़े होकर पढ़ाया है ना? बैठ के पढ़ा रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि कल इसी टाइम शार्पली आ जाना सब लोग। और सुनो, एक काम और करना, इस लेक्चर को जो मैंने आज लिया है अपने सारे दोस्तों के बीच फॉरवर्ड करो, ठीक है? दूसरी बात, अच्छे से गेट का एग्जाम दो। अनअकैडमी का जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, RK007 रेफरल कोड यूज किया करो। दूसरी बात, कैसे कब क्या क्लासेस हो रही हैं ये जानने के लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसका नाम है मेक आर्मी, सारा स्मॉल लेटर है, ओके? मैं यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ। टेलीग्राम में सर्च करो मेक आर्मी। इस ग्रुप में मेरे सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, आप भी मेरे अब अपने हो चुके हो, जो कि नए नए बच्चे आज यहाँ आए हो, सब अपने ही रहोगे, मजा आएगा साथ में। यहाँ पे आपको सारे क्लास के जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, यूट्यूब क्लासेस होती हैं, उनका इधर आपको डिटेल है ना वो मिलता रहेगा ऑन डेली बेसिस। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, बढ़िया डिस्काउंट पाने के लिए RK007, और इसके आगे समझने के लिए, मतलब जो भी हमने डिस्कस किया, कल इसी टाइम पे आ जाना, है ना? कितने टाइम पे? 7:30 बजे, 7:30। Every day I will be taking these lessons and I'll try to complete this whole metal cutting. Not only concept, very good questions, and I will guarantee you, except those questions, nothing will be asked in GATE. I'm not saying that the exact question will come. What I'm trying to say is, except those concepts, nothing will be asked from this chapter. That's my guarantee. But you will have to stay with me. नहीं, ना तो मैं स्पेशल क्लासेस फ्रीक्वेंटली लेता हूँ कृतेश, ना तो यूट्यूब ही फ्रीक्वेंटली लेता हूँ। आई ओनली टेक प्लस क्लासेस फ्रीक्वेंटली, यस। बट आज मेरा मन किया है कि नहीं, मैं पूरा प्रोडक्शन का क्रैश कोर्स करवा दूँ इधर ही। टाइम मिलेगा मटेरियल साइंस भी करवा दूंगा, टाइम मिलेगा थ्योरी ऑफ मशीन भी करवा दूंगा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, है ना? बहुत दिनों से उस पर पढ़ा रहा था, मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ ना, यूट्यूब पे कुछ भी लोग पढ़ा दे रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं देखा यार, कोई कुछ भी बोलता है, जानते हो क्या बोलते हैं? एक को मैंने बोलता हुआ सुना कि एच मैक्स, ये पीक टू वैली हाइट, F²/8R, ये एम्पेरिकल रिलेशन है। फिर एक उसका ही लेक्चर मैंने सुन रहा था, बड़े बड़े आदमी लोग हैं यार ये लोग, ये कहता है F/10 psi s + cot psi e, ये इंपेरिकल रिलेशन है। अरे कैसे कैसे गधे लोग हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। एक ने बोला कि ये ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर इसलिए है, एक ने बोला कि ये वाला ऑर्डर ही इसलिए हमने फॉलो किया क्योंकि अगर ये ऑर्डर फॉलो करते हैं ना, तो पहले रेक फेस को ग्राइंड करते हैं और फिर रिलीफ एंगल्स बनाते हैं और फिर कटिंग एंगल्स बनाते हैं ग्राइंडिंग करके, इसलिए ये ऑर्डर है। वो सब फालतू बकवास है, सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं भाई। वो सब बड़े बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इधर आओ, समझे? मजा नहीं आ गया तो फिर क्या कहूँ, ये सब कोई भी एम्पेरिकल रिलेशन नहीं है, सब डिराइव्ड रिलेशन है ना? लेकिन इसको समझने के लिए तगड़े कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ऐसे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। जो लोग ये बड़े बड़े लोग पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसा डायग्राम, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? तो उनके चक्करों में मत पड़ो, बिलीव मी। प्रोडक्शन का क्रैश कोर्स मत मेरे साथ कर लो। हाँ, क्रैश कोर्स करके मैं 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स की गारंटी नहीं लेता हूँ, बट ये कह सकता हूँ कि 0 लेवल पे भी होगे ना, तो मैं तुम्हारे 50% मार्क्स की गारंटी लेता हूँ। और अगर तुम 0 लेवल पे नहीं हो, मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज तुमने देख रखे हैं अनअकैडमी पे अगर, तब तो मैं गारंटी कहता हूँ कि 15 में 15 लेके आओगे। अगर 15 का आया तो 15 लाओगे, दैट्स माय गारंटी डियर। यस, none of them, whatever the examination, उनसे बाहर नहीं पूछेगा। ओके, चलो तो कल मिलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आना मत भूलना टाइम पे। व्हाट इज द टाइम? एग्जैक्टली 7
30। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।